الله الرحمن الرحيم. Mountains of Mecca, what can you say of the day that Abraham passed your way, and he was instructed by God to build a house of peace where people will pray, and they will come on every lean camel and out of every ravine for the purpose of praising Allah, to glorify Allah. Oh, mountains of Mecca, what can you tell of the day that stones from the sky fell, destroying an army determined to break the house of Allah that Abraham built? Oh, mountains of Mecca, how was the dawn on the day that my prophet Muhammad was born? How did it feel knowing he was to be the last and most beloved of all, Rasul of Allah, Nabi of Allah? Oh, mountains of Mecca, you were there when the prophet... Hira Group of Companies, an established conglomerate in the business field, being within the limits of guidelines specified in the Holy Quran by the merciful Allah, with sheer determination towards the development of Muslim community and the needy poor. मिस्टर ज़ुहैरा शेख, ये इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि मुस्लिम ख़वातीन हर शोबे हयात में कामयाब हो सकती हैं अगर वो कोशिश करें, और अगर वो अपने रब के दामन को मजबूती से थाम कर रखें तो दुनिया की कोई चीज, ना उनका पर्दा, ना उनकी नमाजें, ना उनका इस्लाम को मजबूती से थामना, कोई भी चीज दुनियावी तरक्की के रास्ते में रुकावट साबित नहीं हो सकती. The Hira Group, with a wide-ranging spread in varied businesses, is built around a quintessentially noble objective. Hira Group's ultimate goal is to provide a strong support and a common platform to all Muslim women towards bringing about social upliftment and chartering a better lifestyle for them. Presently, there is a little scope of Muslim women speaking about their rights in any manner, and the group is chartered to contribute massively to minimizing this social shortcoming. Hira Group of Companies is headed by Ms. Alima Sheikh Nohira, who with her sheer vision and business intelligence has created a financially strong business enterprise in the country. Ms. Sheikh has demonstrated that even a Muslim lady can prove to be a successful role model for the otherwise seemingly closed community. Ms. Nohira is also well known for her extensive views on the liberalization of Muslim women and as an educationist of repute. आज इस मदरसे में मैं जब से आई हूँ, जब से मुझे बड़े आपा मुझे इतना अच्छा देखे जितना कि आज तक कोई माँ अपने बच्चे को नहीं देखी. घर में माँ को दो तीन लड़के रहे तो भी वो कितना सताते हैं, और यहाँ पे 300 बच्चों को नोएरा आपा संभालते हैं, और वो इतना संभालते हैं, इतना देखभाल करते हैं जैसे कि माँ भी देखभाल नहीं करती. जब इस मदरसे में नहीं आते तो इल्म न जानते थे, हक और बातिल में फर्क ना हमको मालूम था, न दुनिया और आखिरत क्या है हमको नहीं मालूम था. जब इस मदरसे में दाखिला लिया तो हमको हर चीज़ का मालूम हो गया. मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, और मैं जब मेरा होश आने लगा तो मैं ये अफसोस करती थी कि सबके वालिद हैं और सब अपने औलाद को पढ़ाते हैं, और मेरे वालिद तो नहीं और मुझको नहीं पढ़ाएंगे. लेकिन जब मेरी माँ को मालूम हुआ कि यहाँ तिरुपति में एक शेख नोहिरा बाजी है जो यतीमों की दर्द माँ है और उनकी मदद करने वाले हैं, तो मेरी माँ ने इनके मदरसे को भेजने का आज़्म किया. मेरी माँ की मोहब्बत से दूर होकर इधर आई तो मुझे ये मालूम हुआ कि मैं यहाँ वाक़ई सब कुछ है. मेरी माँ बाप हैं और रिश्तेदार हैं और बहन भाई हैं.
शेख नोहिरा बाजी ने मेरी हर कमी को दूर किया और हर साल मेरे कपड़ों का इंतजाम किया जाता है और मेरी यतीमी को मैं अफसोस नहीं करने के लिए मुझे फीस भी नहीं लिया जाता। मैं यहाँ 4 साल से इल्म हासिल कर रही हूँ। Hailing from Tirupati, Chittoor district in Andhra Pradesh, Ms. Nohira Sheikh also runs a women's Arabic college in Tirupati with the essential purpose of educating Muslim women. यहाँ के मुसलमान बिल्कुल समुंदर के उस तूफान के आगोश में आ गए कि लोग डूब रहे थे। नौहिरा आपा ने एक कश्ती बनाई और कश्ती बना करके उस समुंदर में डाला और एक तरफ अपना मदरसा बनाने का ख्याल किया और मदरसा बना करके उन्होंने एक कमंद डाला उस कश्ती पे और कश्ती को बाहर निकालने की कोशिश की। अल्लाह का फजल है कि यकीनन वो कश्ती साहिल समुंदर पर या साहिल दरिया पे लग चुकी है और यहाँ तक वो कामयाब हो रही हैं कि कश्ती वालों को निकाल करके उस आशियाने में या उस घर में ले जा करके आबाद करें, यानी उनको मुकम्मल नजात दिलाने का उनका पूरा प्लान बन चुका है और प्लान वो कामयाब है। As the president of a reputed Muslim women's organization, At-Tawheed International Dawah Center for Women, Ms. Nohira has been supporting a great number of poor and downtrodden Muslim women. A revolutionary female came up to stand for her own community's betterment and as a helping hand for Muslim women needs. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। वो तो दीन के एक हीरो मानते हैं हम उनको। मैं तो समझता हूँ कि एक हीरो है। ऐसे आपा अगर 4 आदमी इस तिरुपति में और 4 आदमी बगैर मकामात पर अगर समझेगा तो दीन और हिंदुस्तान को बड़ी ताकत मिलती, मैं समझता हूँ। In the year 2007, owing to the astute marketing and business acumen possessed by Ms. Nohira Sheikh, the Hira Group of companies made its presence with Hira Gold Exports and Imports, which is now poised to make inroads even into the farthest markets across the globe. With its involvement in gold exports and imports, investments and gold jewellery business modules, got a widely spread network with the support of its own branch offices across India, Middle East and West African regions. Hira Group stands on its own exclusive place in the field of gold export and import business channel by providing best quality, best transfer rate as it obtains gold directly from the mines of Accra City, Ghana in West Africa. Hira Group of Companies is a well-established structure with interests into businesses of diversified nature as in price of over 6 organizations. Having been conceived and commissioned by the renowned Ms. Nohira Sheikh as the managing director, the group has an extensive presence in the market through Hira Gold Exports and Imports, Hira Investments, Hira Textiles, Hira Electronics, Hira Jewellers and Hira General Trading Private Limited. Hira Gold Exports and Imports. As our core business, HGEI is a vital component of the Hira Group with massive experience and market prowess on business of gold and diamonds. We are well networked with direct miners, that is sellers of gold and diamonds, and with a significant clan of buyers spread over Asia and Europe. We deal in various categories of gold bars, gold dust and rough cut diamonds in the form of 100% purity and unquestionable longevity. Demonstrating excellence in every facet of business, HGEI has achieved spectacular success in a very short period. The accolades that we have earned have placed us among the top exporters and importers of gold and diamonds in our country today. सबसे बड़ा राज अल्लाह की जात पर तवक्कल करना है और अल्लाह की जात पर तवक्कल करना है। जब एक काम के लिए कदम को आगे बढ़ा दिए तो वो काम के लिए कदम को कभी भी पीछे नहीं हटाना है और कुछ दिन कोशिश करेंगे, उसमें हम जरूर कामयाब रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम रोल मॉडल किसी इंसान को बना लेते हैं तो वो इंसान आज अच्छे अखलाक करता है, कल बुरे अखलाक करने लगता है, तो फिर हम कहाँ जाएं? तो इसलिए हम रोल मॉडल बनाए हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसको रोल मॉडल बनाने का हुक्म अर्श वाले ने किया। Hira Investments, Hira Group of Companies, providing a fabulous opportunity to the entire range of Muslim community to earn an extra income.
which is valid through Halal business module as prescribed by Holy Quran. Hira Investments is a flagship company of the Hira Group, having been conceived with the object of providing enterprising solutions in the investment industry, India and the Asia Pacific regions. एक हलाल तिजारत की बात को समझने के लिए अल्लाह ने जम फरमाया। मैं सबसे भाइयों और बहनों से गुजारिश करना चाहूंगी कि कोई चीज इंसान के ताकत से और इंसान के सोचने से, इंसान के प्लान से कुछ भी नहीं हो सकता। ये सारे चीजों में जब अल्लाह की मदद होती है, अगर अल्लाह इसमें हमको सपोर्ट करते हैं, अगर अल्लाह की मदद होती है तो ये काम अल्लाह ताला जरूर से इस काम को अल्लाह तकमील को पहुंचाते हैं। Success of the core business, that is, Hira Exports and Imports, has given us the impetus to venture into this associated business and holds immense promise to shareholders and customers of the company. Our expertise with the financial business can prove vital for investors towards successful investments in gold trading, stocks, bonds, shares and mutual funds. Success is largely due to the fact that our products and services are of the highest standards and committed with the customer as the center of our business. Hira Jewellers is built on a passion for excellence and fine product quality, offering a wide range of gold, diamond, silver, precious and semi-precious stone jewellery with elegant traditional designs and intricately patterned contemporary craftsmanship of products comply with BIS hallmark and ISO 9000 standards and are truly world-class. Added to our regular business, we have a range of schemes for enabling all levels of clients find ease of purchase in their desired jewellery at their own convenience. Hira Group recently decided to provide the same benefit to the end customers also by establishing their own chain of showrooms selling hallmark certified gold jewellery with a very competitive rate compared to the entire market. Hira Group, under the guidelines of its chairman, Ms. Nohira Sheikh, who always followed the guidelines of Quran and with a noble thought of helping the poor and the needy, has emerged Hira Group as one of the best women-driven organization across the globe. Hira Group of companies has decided to enter into the market with Hira General Trading Private Limited through various quality products and articles through its general trading sector, which covers groceries, quality textile products, fashion and fancy articles, electronic and electrical instruments, office and home decorative items, daily needs, imported kitchenwares, etc. With the widespread of its trustworthy channel built all these years, Hira Group has planned to open supermarkets across India, Middle East in the near future to make its imported and patented material available to all the public.